And now, good evening, everyone. Warm greeting to all the participants joining us today from different places. On behalf of Government College Khairtal, I extend my warm welcome to you all to this special online session organized by Government College Khairtal. And I would like to say thank you to Dr. Neetu Jevaria, our principal ma'am, for her consistent encouragement, visionary guidance, and inspiration that motivate us to organize such enriching programs. Ms. Saraswati Meena ma'am, assistant professor in English department, and Mrs. Sakshi Jain ma'am, who is convener of the women cell in our college, and especially Mr. Ankit Anil, whose support and coordination that helped make this online meeting possible. Now I want to request Miss Saraswati Meena, ma'am, to uh, please present formal introduction, academic profile, and achievements of Miss Ikram. Thank you, sir. Please, Saraswati Good ma'am. morning, good evening, everyone. A warm welcome to our principal ma'am, esteemed faculty members, and dear students. We are gathered here for a very special interactive dialogues on a powerful and inspiring themes. How does education empower a girl to make her own choices? Education is not merely about reading books and passing examinations. It is about awareness, confidence, freedoms, and identity. It gives everyone the voice to speak, the courage to decide, and the ability to shape his her own future. So, to guide us through this meaningful discussion, we are truly honored to welcome an exceptional scientist and a remarkable role model for young women in STEM, Miss Ikram Mezghani. It's my honor and privilege to introduce Miss our chief guest, Miss Ikram Mezghani, a brilliant biomedical scientist with an impressive global academic journey. Ikram completed her bachelor's in biological sciences from Imam Abdul Rahman bin Hejaz University in Saudi Arabia and her master's in biomedical sciences from Bonn Rhein-Sieg University of Applied Sciences in Germany. Currently, she is pursuing her PhD in biomedical sciences at the prestigious Penn State University College of Medicine, United States. Her advanced research focused on mitochondrial dysfunctions in neurodegenerative disease, particularly Alzheimer's disease. Along with this, she has worked on diabetes, wound healings, regenerative medicines, and various translations biomedical research areas. But beyond the walls of the laboratory, what makes her truly admirable is her dedications to mentorships and empowerments. She supports and guides high schools, undergraduates, and graduate students, especially those from minority and underrepresented backgrounds. Having carved her own place as a woman in science, she strongly believes in empowering others. Her mission is to inspire young women to step into STEM. For the STEMs, he STEMs is not just a field of study, but a gateway to confidence, leadership, and a world full of opportunities. She dreams of a future where every girl can choose her own path without fears and limitations. So we can say that her story is one of courage, curiosity, and commitment across various nations and multiple disciplines. She stands as a beacon for the next generations of scientists, especially young women who dreams of breaking barriers and transforming healthcare through the research. Finally, concluding my words, I strongly say that so there is no doubt that her journey itself is a shining examples of today's themes. Education can transform a girl into a powerful leader who can make her own choice confidently and contribute meaningful to the world. Uh, so I now I now request to Deepak sir, please join to extend the warmest welcome to an exceptional scientist, a powerful advocate, and an inspirational global leader in biomedical innovations, Miss Ikram Mezghani.
Please, sir. Thank you, Saraswati Meena ma'am, for the Okay, sir. warm and informative introduction. And now I would like to delighted to welcome our loving Ruchi Arora, a global scholar who completed her MSc in education from the University of Pennsylvania, USA. She joins us today as a translator and as a close friend of Miss Mezghani. We sincerely thank her for her presence and support to make this conversation more engaging and accessible to everyone. Thank you, Ruchi. Thank you so Want, much want to for, say something? yeah, I'm saying thank you so much. I'll try my best in English and in Hindi also. I will try my best in translating. But I really genuinely feel that the language of love is beyond words. But this right now we need some words to translate, but I'll definitely do my best. Okay, thank you. And now, without further ado, we warmly invite Ms. Mezghani to share her thoughts and perspective with us. Ma'am, the floor and the screen is yours. Thank you all. And thank you so much for the lovely introductions. And it's lovely to meet you all. And I'm very honored to be with you all today. And I hope it's an inspiration, not only for the women on the call today, but for everybody that aspires to be more than what they want to achieve. So without further ado, let's start with our talk today. So as you can see from the title, our main focus will be to understand how does education empower a girl to make her own choices. And I would like to walk you through the agenda for today. It looks like a lot, but trust me, the conversation will flow and it'll be a very interesting talk for all of you. I will go Ruchi, over just some. Ikram, I Yes, want to say, should I take? Ruchi, Yes, please time to time means time to time please explain things to our students. समय के साथ बिल्कुल एक एक दो Okay. दो मिनट में बताते रहिए तो नहीं तो फिर तो मिस हो जाएगा. Okay. So we can do, Ikram, you can say like a 1 minute paragraph, then I can explain and then, and then we'll yes, do. that sounds Okay. perfect. Thank you. Okay, all Yeah. right. So just for now, let's finish the introduction and just tell people that we're going to be talking about why education empowers a girl to make her own choices. Yes, So अभी Ruchi. इकरम अब शुरुआत करेंगी अपनी प्रेजेंटेशन का और वो बताएंगी कि कैसे जो शिक्षा है वो हमारी जिंदगी में स्पेशली विमेंस की जिंदगी में लड़कियों की जिंदगी में कैसे एक अहम भूमिका है आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन के फैसले खुद लेने के लिए. Yes, Ikram. Perfect. And then we will be walking through the agenda. So our agenda for today will be first a welcome and an icebreaker. And then we will go into understanding why education matters. And then I invited another speaker, surprise, but her name is Sonal Garg, and she is my colleague and my friend and my sister. And I would be more than happy to introduce her. I think she will be joining in a couple of minutes. She's also a PhD candidate at Penn State College of Medicine. I will then talk about my own journey, talk about how breaking barriers and overcoming challenges as a woman in STEM, and I will show you some successful Indian women to inspire all of you. And then we will talk about how you should dream big and set your goals and take action, and how that will give the ripple effect of inspiring other people. Afterwards, we'll talk about reflection and have another interactive Q&A session. Ruchi. जी. तो आज का जो एजेंडा है, आज जो हम जिस टॉपिक और जिस संदर्भ में हम बात करेंगे वो कुछ इस प्रकार है. पहले एक आइस ब्रेकर जो आप एक छोटी सी गतिविधि हमारे साथ करेंगे कि हमारे माइंड में कुछ कुछ चलता रहता है, हमारे मन में हमारे विचार, तो उसको तोड़ने के लिए एक सुर में हमें बांधने के लिए एक आइस ब्रेकर एक्टिविटी होगी. उसके बाद बताया जाएगा कि एजुकेशन शिक्षा का क्या महत्व है, क्यों वो इतना मायने रखती है हमारी जिंदगी में. फिर एक इकरम एक सरप्राइज भी लेके आई हैं. वो अपनी एक मित्र जो उसे बहन के जैसे मानती हैं और उनकी सहपाठी हैं, उनको वो हमसे रूबरू कराएंगी और वो भी हमें कुछ मिनटों में हमें ज्वाइन करेंगी. उनका नाम है सोनल गर्ग, वो भी एक पीएचडी कैंडिडेट है और वो अपनी जर्नी के बारे में बताएंगी. इकरम,
और वो बताएंगे कि कैसे बैरियर्स को, कि कैसे जो रुकावटें हैं उनको तोड़ना जरूरी है और किस तरह से तोड़ा जाएगा, किस तरह से चैलेंजेस आते हैं और किस तरह से हम उन चैलेंजेस से आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ सक्सेसफुल इंडियन वुमेन जो हमारे समाज में, हमारे भारत की जो सक्सेसफुल इंडियन जो वुमेन्स हैं, जो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में जो एक एग्जाम्पल स्थापित की हैं, उनके बारे में हमें बताएंगी और बताएंगी कि कैसे बड़े सपने देखते हैं, बड़ा गोल सेट करते हैं और कैसे उन सपनों को पूरा करेंगे, और उनके रिपल इफेक्ट्स लाइक उनके इफेक्ट्स क्या होंगे इसमें। दीपक भैया, अगर मुझे, दीपक सर मुझे रिपल का अगर वर्ड बता दे तो अच्छा होगा। तो जैसे कि आपने कुछ अच्छा किया तो उससे आप किसी और को प्रेरित करेंगे, तो वो एक तरह से कंटिन्यू एक जर्नी बन जाती है। और रिफ्लेक्शंस, हम हमें क्या कैसा लगा ये पूरे आज का जो हमारा टॉक था, उसके बाद हमें क्या फील हुआ, इकरम को कैसा लगा, वो सब हमसे शेयर करेंगे। और एक लास्ट में हम सवाल शुरू कर सकते हैं। किसी के मन में कोई सवाल है, इकरम के मन में कोई सवाल है, तो आप सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू होगा और फिर इस पूरी टॉक जो भी हमारी होगी उसका अंतिम चरण सवाल और जवाब होगा। तो इस तरह से हम ये पूरा सेशन शुरू होगा। रिपल इफेक्ट मींस जब हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो पूरा असर दिखाई देता है, तो जब एक बार यदि ट्रैक पे आ गई तो उसका असर फिर आगे तक नजर आएगा। तो ये रिपल इफेक्ट। यस यस इकराम। Thank you. All right, so let's move on. And again, hi everyone. My name is Ikram, and I'm really excited to be with you here today to talk about something that is very important and that changed my own life, which is education. But before we start, I want each and every one of you to think about this question that I will be asking you, and that is, who do you want to be when you grow up? So each one of you, throughout this discussion, think about who do you want to be when you grow up. Um, and I want you to keep in mind that all these dreams are possible. It doesn't matter where you come from, what your background is, and what challenges you face. Education is for everyone. And education is the bridge that can take you from where you are today to where you dream to be tomorrow. जी, तो इस सेशन की शुरुआत एक सवाल से है, जिसको जैसे ही हमने पहले बताया था, आइस ब्रेकर। हमारे सबके माइंड में कुछ सवाल होंगे, लेकिन हम एक स्तर पे बात कर पाए। तो सबसे पहले ये सवाल है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। आपकी परिस्थिति, चुनौतियां, जीवन में जो भी आपकी स्थिति है, उससे परे हटके आप जो भी बनना चाहते हैं दिल से, आप उनको मद्देनजर ना रखें। आपका जो मन कहता है, दिल कहता है, आप क्या बनना चाहते हैं, इसके बारे में आप सोचें, विचारें और एक एक करके हमसे शेयर करें। All right, so let's dive deep into it. So, why does education matter? Education gives you knowledge, but also it gives you confidence, it gives you the independence and the freedom to choose your future. It helps you discover who you are and what you're capable of, your hidden talents, and your own superpowers. So, do you know when girls go to school, they earn more money when they grow up, their families are healthier, their community is more knowledgeable and well taken care of, and also their country as a whole grows in the international sphere. That's why it is very important to pursue education, not just as women, but as people. And each one of you sitting here today is capable of becoming that beacon of light, not just for yourself, but for everyone around you. And your light will guide your friends, your family, your loved ones, and your community towards a better future. तो शिक्षा का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो एक विमेन, एक महिला की जिंदगी में या किसी भी एक इंसान की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको एम्पावर करता है। पहले तो वो आपको विचार देता है सोचने समझने का, जिंदगी में बेहतर डिसीजन लेने का। आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं जिंदगी में। आप अपने बारे में अच्छा बुरा, समाज के बारे में अच्छा बुरा सोच समझने की आपको शक्ति मिलती है। दूसरा, आप उससे पैसा कमा सकते हैं। आप इकोनॉमिकली भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, जो कि
एक महिला की जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब वो अपने पैसे कमाती है तो वो केवल ना खुद को एम्पावर फील करती है, बट वो पूरे पूरे समाज में कहीं ना कहीं एक योगदान देती है। वो इकोनॉमी में भी योगदान देती है, अपने परिवार में भी योगदान देती है, और ये फैमिली में भी इम्पोर्टेंट है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो कहीं ना कहीं पूरी फैमिली जो होती है कि वो मजबूत फील करती है। वो अपने बच्चे को भी उसी उसी तरह से आगे बड़ा करेगी। वो अपनी कम्युनिटी में और जो महिलाएं हैं और जो लड़कियां हैं उनको भी इंस्पायर करेगी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इससे इनइक्वालिटी जो है उसको उसको भी हम कम कर कर सकते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि पुरुष जो कमाने का जो पूरा जिम्मा है वो पुरुष का है। तो ऐसा ना मान के हम मानते हैं कि जब हम शिक्षित होते हैं तो हमें वो जो सोचने समझने की जो क्षमता महसूस होती है, तब हम जो एक इकोनॉमिक जिंदगी है जो जहाँ पे हम पैसा कमाना, अपने आप को प्रेजेंट करना एक एक महिला के रूप में, तो हम सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ते हैं हर तरह से। Right. And then I want you all to look at the picture of the two women who are wearing their graduation caps. That is possible for each and every one of you. And that is a big milestone. So you wear that when you get your bachelor's degree, your master's degree, and so on and so forth. And it's an honor to carry, and an honor not just for you, but also for your family. And with that, I would like to introduce you to my very lovely friend who is on the call today. Sonal Garg is a PhD candidate at the Penn State College of Medicine, who also comes from India. And I want you all to meet her today and hear about her journey and how she found herself in the US. Oh my God, Ikram. This was a surprise to me. Okay. Hi, guys. Hi, If you want Sonal. me to speak in Hindi, I can do that. So just tell me, should I do in Hindi or English? Yeah, it would be better. You can speak in Hindi. Okay. All right. So, okay, I won't be able to speak very, very typical words of Hindi like you were using. So please correct me if I'm using a lot of English somewhere there. Yeah, you can Okay. mix. ओके तो हेलो सबको। मेरा नाम सोनल है। मैं बठिंडा से हूँ इन पंजाब, एंड राइट नाउ अभी मैं यूएसए में हूँ। पीएचडी कर रही हूँ इन बायोमेडिकल साइंसेस। तो मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री थापर यूनिवर्सिटी से करी है जो पटियाला में है। तो वो पहली बार थी जब मैं अपना घर छोड़कर गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। तो मैं 18 साल की थी उस टाइम, पहली बार जिंदगी में मैंने अपना घर छोड़ा था। तो जब मैं डिग्री करने गई, 4 साल की डिग्री थी, दैट टॉट मी, वहां पर मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला कि मैं एज अ पर्सन कितनी चीजें हैं, कितना कॉन्फिडेंस मिलता है। स्पेशली बिकॉज मेरे को लगता है एजुकेशन हमें बहुत ज्यादा अवेयर करती है, बहुत ज्यादा हमें चीजें दिखाती है। जिंदगी में बहुत चीजें हमें पता चलती हैं कि ये क्या सही है क्या गलत है, जिससे हमें कॉन्फिडेंस आता है, जिससे हमें हिम्मत मिलती है अपनी आवाज उठाने की और लोगों के सामने अपना अपना हक रखने की या फिर अपनी वॉइस रखने की, जैसे हम बोलते हैं। तो मेरे पिताजी केमिस्ट्री के टीचर हैं, तो उनकी वजह से उन्होंने हमेशा एजुकेशन को इम्पोर्टेंट समझा है। उन्होंने हमेशा ये सोचा है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों पढ़े। तो ये चीज ने मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस दिया था कि मैं अपनी बाउंड्रीज के बाहर जाकर अपने ड्रीम्स पूरी कर सकती हूँ। क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे वो पंख दे रहे हैं जिनके कारण मैं उड़ सकती हूँ। तो आफ्टर एजुकेशन, तो सबसे पहले जो मेरी लाइफ में एजुकेशन ने मेरे को हेल्प किया है वो है कि मैंने बायोटेक्नोलॉजी करी थी, जिसका ज्यादा स्कोप नहीं है इंडिया में, जिसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जॉब्स नहीं है। काफी लोगों को, क्योंकि बहुत नई फील्ड है, ये लोग सीख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, नई फील्ड है, इन्वॉल्व हो रही है अभी इंडिया में। तो मेरे साथ के जो लोग डिग्री कर रहे थे उस टाइम, उन सब ने किसी ना किसी और फील्ड में अपने आप को बिजी कर लिया। वो कॉर्पोरेट जॉब करने लग गए किसी किसी की तरह की, बिकॉज क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का ज्यादा स्कोप नहीं था, लोगों को नहीं पता था ये न्यू है, कैसे ये लोगों को हेल्प कर सकती है, कैसे हम इसमें जॉब्स लेके आ सकते हैं, कैसे नहीं। बट एजुकेशन की वजह से मैंने वो खुद पता करा, मैंने खुद रिसर्च करी, मैंने खुद पता करा कि मैं बायोटेक्नोलॉजी में रह के क्या अपनी जॉब्स बना सकती हूँ क्या नहीं। मेरे पापा पढ़े लिखे हैं, बट मेरे पेरेंट्स को भी, मेरी पूरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो इस फील्ड में है। तो किसी को नहीं पता था कैसे वो मेरे को गाइड कर सकते हैं, कैसे वो मेरे को बता सकते हैं कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर सकती हूँ आगे, क्या हाउ व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आई कैन डू।
तो आई थिंक एजुकेशन की वजह से मैं वो पढ़ पाई, मैं खुद अपने आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बना पाई। तो आफ्टर कंप्लीटिंग वो डिग्री खत्म करने के बाद मैं 1 साल बैंगलोर गई थी, 1 साल मैंने वहां पर जॉब करी नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में। उसके बाद मेरे को एक और अपॉर्चुनिटी मिली जिसकी वजह से मैं फरीदाबाद गई, ट्रांसलेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट, वहां पर 1 साल जॉब करी। और उसके बाद मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया अपनी लाइफ का कि मैं अकेली पूरे एक देश से दूसरे देश तक आई, यूएस से आई। और यहाँ पर मतलब मेरे पास कोई नहीं है, आई डोंट हैव अ फैमिली हेयर। सो इट मैं अपनी फैमिली से सबसे पहली लड़की हूँ जिसने एक कंट्री छोड़ के वो किसी और कंट्री गई है, और यहाँ पर मैं पीएचडी कर रही हूँ। एंड आई थिंक मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स के लिए और अपनी लाइफ चॉइसेस के लिए कि एजुकेशन ने सिर्फ मेरे को नॉलेज नहीं दी, सिर्फ मेरे को अवेयर नहीं किया, बट उसने मेरे को बताया है कि आई हैव अ वॉइस, आई कैन मेक डिसीजंस फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए खुद अपने डिसीजन बना सकती हूँ, और वो डिसीजन सही हो गलत हो मैं खुद उनको संभाल सकती हूँ। तो आई थिंक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि तुम्हें चीज़ों का पता चलेगा, बट इट्स जस्ट अबाउट कि तुम और बोल सकोगे और लोगों के सामने आ सकोगे, जिसने तुम्हें बहुत हेल्प करना है। एंड नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, हमें हेल्थ केयर के बारे में बहुत चीज़ें पता चलती हैं, हम अपनी फैमिलीज के लिए बहुत चीज़ें जान सकते हैं, हम अपने बच्चों का ध्यान ज़्यादा अच्छा रख सकते हैं। अगर पहले लेडीज़ पढ़ी लिखी नहीं होती थी तो उनको नहीं पता था बच्चों के लिए क्या न्यूट्रिशन, क्या हेल्थ केयर ज़्यादा बेटर है। अब एजुकेशन की वजह से हम अपने बच्चों का भी ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं, अपना भी ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं, और अपनी फैमिली का। शादी के बाद ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ घर पे रह के अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे। अगर हम पढ़े लिखे हैं, अगर हम कमा सकते हैं अपने लिए, हम अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रख सकते हैं। दैट्स ऑल। जी Thank you, Sonam. I really थैंक यू, appreciate. थैंक यू I फॉर got it हैविंग a मी। little bit here and then there, but thank you so much. I It's am very mixed up lovely to now. know It that has you been speak. 3 years I'm speaking English. I'm mixed up. I forget Hindi in between. थैंक यू सोनल जी, आपने You बहुत spoke अच्छा हिंदी बोला। beautifully. एंड मैं भी पैन स्टेट आता रहा हूँ, मैं कोलंबिया से पढ़ा हूँ, अंकित हूँ मैं। और Okay. बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। और आपने जो कहा कि एजुकेशन से हम लोग डिसीजंस लेना सीखते हैं, वो सही हो या गलत, तो ये बहुत हाँ। ही अच्छी बात लगी। और कभी जिंदगी में हम मिलेंगे अमेरिका में या इंडिया में। और आप जरूर। हमारे गवर्नमेंट कॉलेज खैरतल, आप कभी पर्सनली भी आइएगा, ठीक है? जरूर जरूर, yeah, जी I will be दीपक more जी। happy to come. यस, इस Thank समय you. आपको अच्छा लगेगा जानकर सोनल, यहाँ इस कॉलेज की प्रिंसिपल मैम, यहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सभी लोग आपको सुन रहे हैं बच्चों के साथ। Okay. या Mm, थैंक यू thank you, सोनल जी। thank you. थैंक यू सोनल जी। Thank you, मैं Sonam. मैं Thank you. दीपक हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज खैरतल। आपने बहुत Hmm. अच्छी तरह से अपनी लाइफ एक्सपीरियंस, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, आपने बहुत अच्छे से शेयर किए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे Hmm. साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। Thank you so much. Thank you. And I pray and I look forward to the day that I see you as a professor, Dr. Sonam. यस इकरम, वी कैन कंटिन्यू। Of course. So with that, now that you heard from Sonam, I want to share my own story. So, as you may know, I graduated from a university in Saudi Arabia, and from my background, the second picture is with my mom, and my mother never got to complete her education. So she made sure that her daughter would go ahead and finish with her studies, and I am very proud to hold her proud as well to those expectations. I later on moved to Germany, where I met a lot of people from all over the world. A lot of them come from India as well, and Pakistan, and Bangladesh, and Sweden, and Albania, everyone. So you get to meet all these different people and share these experiences and learn from different perspectives in life. And it just broadens the way that you see things and even solve some problems. And in Germany, I fell in love with biomedical science. I fell in love with research and answering these difficult questions and learning more about how diseases work and try to figure out how to figure out the mechanisms and the cures for these diseases. रुचि, And education, yes, just to finish off, education gave me that confidence to dream big and to believe that I can achieve it.
तो इकरम अपनी जर्नी के बारे में बताते हुए हमसे साझा कर रही हैं कि पहले जैसे कि हम सबको बताया इकरम ने कि उन्होंने सऊदी अरेबिया से अपनी जो बैचलर्स डिग्री है वो स्टार्ट की। तो उन्होंने हमें ये भी बताया कि जो पिक्चर, जो सेकंड पिक्चर है, जो उन्होंने ग्रेजुएशन गाउन पहना हुआ है, वो उनकी माता जी के साथ है, उनकी मदर के साथ है, जो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई थी। तो इकरम के लिए बहुत ही गर्व का ये दिन था जिस दिन उनको ग्रेजुएशन कैप मिली और वो अपनी मम्मी के साथ वो शेयर कर पाई और उन्होंने अपनी मम्मी को भी वो कैप पहनाई। और ये बहुत उनके लिए गर्व की बात थी, और क्योंकि उनकी माता ने, उनकी मदर ने उन्हें बहुत प्रोत्साहन दिया आगे बढ़ने के लिए, तो उस दिन को वो बहुत याद करके बहुत खुशी जाहिर कर रही हैं और हमें बता रही हैं इस तरह से। फिर उन्होंने एक ये पिक्चर जो हम ग्रुप में देख पा रहे हैं, ये तस्वीर जर्मनी की तस्वीर है। फिर इकरम आगे जर्मनी की यात्रा पे निकली, और क्योंकि जब शिक्षा उन्होंने अचीव की, उन्होंने जब बैचलर्स डिग्री प्राप्त की, तो उन्हें एक कॉन्फिडेंस आया, उनके परिवार ने उन्हें वो कॉन्फिडेंस दिया कि आप आगे बढ़ सकती हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। तो वो जर्मनी गई, वहां पढ़ी, और पढ़ाई के साथ साथ आप देख सकते हैं वो जैसे कि वो बता रही हैं कि वो विभिन्न लोगों से मिली। पाकिस्तान के कुछ लोग थे, इंडिया से कुछ थे, स्वीडन से कुछ थे। तो सबके साथ बातें करना, उनके बारे में उनके विचार साझा किए, उनके साथ अपने बारे में बताना, अपने देश के कल्चर को शेयर करना, उनके कल्चर को समझना, जो कि एक अहम भूमिका निभाते हैं शिक्षा के अलावा, कि दूसरों के विचारों को अपनाना और अपने विचारों को किस तरह से हम दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस तरह से इकरम ने हमें जर्मनी की जर्नी समझाई। इस तरह से उन्होंने जर्मनी में दोस्ती दोस्ती की। और उसके साथ साथ इकरम ने ये लैब की भी फोटो हमारे साथ शेयर की है, जो कि वो बता रही हैं कि किस तरह से उन्हें पढ़ाई में भी बहुत मजा आया वहाँ जर्मनी में, उन्हें प्यार हो गया लैब से, उन्हें रिसर्च में बहुत मजा आने लगा, उन्हें वो डिफिकल्ट जो बहुत ही जो मुश्किल क्वेश्चन थे, सवाल थे, उसमें उसको उसका आंसर निकालने में, उसको सोल्यूशन निकालने में उन्हें मजा आने लगा, और उन्हें समझ गया था कि वो बायोमेडिकल ही आगे पढ़ाई करेंगी, और उन्हें और ताकत मिली कि नहीं, वो अब आगे जाके पीएचडी की राह चुनेंगी, और भी मुश्किल और भी जटिल प्रश्नों को वो हल करने की चाह रखते हुए पीएचडी के तरफ निकल पड़ी। धन्यवाद इकरम। And also to add to that, so none of this would have been possible without having the backbone of family support that Sonal talked about, the mentorship and the guidance that you find in other people. इकरम ये भी जितना भी उन्होंने अचीव किया अपनी जिंदगी में, चाहे वो जर्मनी हो या फिर वो अभी पीएचडी कर रही हैं, वो फैमिली के सपोर्ट के साथ, फैमिली का सहयोग के साथ, उनके माता पिता और जितने भी अन्य परिवार के सदस्य हैं उनके सहयोग के साथ वो आगे बढ़ी, और जितने भी लोगों से वो मिली, उनके विचारों को जो उन्होंने अपनाया, उनके मेंटर्स, उनके टीचर्स, उनके विचारों ने उन्हें जान दी, उन्हें सपने देखने के लिए आगे प्रोत्साहन दिया, और अपनी जर्नी में, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी। Absolutely. And afterwards, I left for my PhD in the USA. And this is my current lab. And I have a wonderful mentor who also not only did I go to pursue my studies in Germany, in the US, but she also sent me to Austria to learn a few techniques that are important for the work that I do. I also got to meet various other people from all over the world and learn from them and volunteer. So this is a initiative where we mentor high schoolers and teach them about neuroscience. These are all my mentees in the lab, and one of them is Sona, who you had the pleasure of meeting today. And I got to meet different mentees from all over the world with different backgrounds, with different needs. And I not only was I mentored to reach the places that I am in right now, but I also had the honor and the privilege of mentoring the next generation, and I hope to continue doing that. I also got to present a lot of my science in different conferences and places of knowledge with other scientists, and I got to fall in love with working with mice and mitochondria. Ikram, I just want to confirm, you share about one mentee that I forgot the name. If you can just mention the name. This boy, like you were Sonal. Sonal was your mentee? Sonal. Yes, yes. So this is Sonal right here. Okay. I'll just put a I get it. but that's Sonal. Okay. Yeah. Thank you.
सो इकरम हमें बता रही हैं कि किस तरह उनकी आगे की यात्रा पीएचडी की जर्नी शुरू हुई, और वो अपनी लैब की कुछ फोटोज भी हमें दिखा रही हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं वो कोट में कितनी स्मार्ट लग रही हैं और लैब में अपने दोस्तों के साथ खड़ी हैं। और वो बता रही हैं कि उन्होंने यूएस के साथ वो ऑस्ट्रिया भी गई। उनके जो टीचर थे उन्होंने उनको मार्गदर्शन दिया कि आप ऑस्ट्रिया में जाके कुछ और वॉलंटियर काम भी कर सकते हैं और कुछ अध्ययन भी कर सकते हैं। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो हमारे साथ साझा कर रही हैं कि वो केवल अपनी पीएचडी की यात्रा में आगे बढ़ी, वो और जो स्कूल के जो बच्चे हैं 11th और 12th क्लास के, जो उनको वो मार्गदर्शन देती हैं कि किस तरह बायोटेक्नोलॉजी में अपना आगे फ्यूचर वो बना सकते हैं। अगर उनको कुछ सवाल हैं इस क्षेत्र में तो वो पूछ सकते हैं। तो वो शिक्षक भी हैं एक तरह से, हम कह सकते हैं, अगर वो विद्यार्थियों को इस तरह से समझा रही हैं, और वो खुद भी पढ़ाई कर रही हैं जो कि पीएचडी की जो कि जर्नी में वो अभी पढ़। और उसके अलावा उन्होंने हमें ये भी बताया कि उन्होंने कुछ रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं। जब हम पीएचडी करते हैं तो हमें कुछ लेख भी लिखने होते हैं जो कि बहुत अध्ययन के बाद हम लिखते हैं और फिर उनको सबके सामने साझा करते हैं, जो कि उस दुनिया के लोग होते हैं जो उस दुनिया के रिसर्च पेपर को समझ पाते हैं। उस दुनिया के सामने वो पेपर साझा करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक गर्व की बात होती है एक रिसर्चर के लिए, एक पीएचडी जो परस्यू कर रहा है उस स्टूडेंट के लिए। तो इकरम ने वो मुकाम भी हासिल किया कि उन्होंने रिसर्च की, और ये सब उन्होंने अपने मेंटर्स के साथ, अपने और सहपाठियों के साथ साझा किए। So, with that, now that you know these two different stories of different people that pursued their goals with the help of education, I want to go over some breaking barriers and overcoming challenges. All of this is not easy. It's something that you need to pursue, and you pursue it throughout your whole life. And sometimes, as girls, we face a lot of challenges that can make us either doubt ourselves or have lower confidence. Maybe someone told you one day that science or math is only for boys, or that you should choose something that's easier and that's something that is only for girls. Or maybe you felt like you don't belong in certain spaces, or that your voice doesn't matter as much. But here's the truth, and I hope that each one of you believes this: none of that is real. You do belong, and you can do difficult things or things that you think are difficult. Everything that you pursue will eventually become easy, and you will become an expert in it. You can be the first to break those barriers, and you can be the inspiration to others to others to follow. And it's okay to face setbacks. What matters most is that you rise up again. You never let it stop you, no matter what. Ask for help, keep learning, seek mentorship, lean on to people and to family members. Remind yourself that every strong woman that you admire once had moments of doubt too. You're not alone, and resilience is key so that you never fail. It's about believing in yourself and enough to try again over and over again. इकरम हमें बता रही हैं कि किस तरह से जो हमारे बंधन है समाज के, या हमारे मानसिक बंधन है, उसको हम किस तरह से तोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। और स्पेशली जो लड़कियों के लिए है, कभी कभी हमें ऐसा बताया जाता है कि साइंस आपके लिए नहीं है या मैथ आपके लिए नहीं है, डिफिकल्ट चीजें आपके लिए नहीं है, कि ये साइंस और मैथ तो केवल लड़के ही करते हैं, लड़कियां तो आसानी से कुछ आर्ट्स पढ़ लें या कुछ सिंपल सा या आसानी वाला रास्ता, स्पेशली आर्ट्स के, जैसे हमारे भारतीय समाज में बहुत ये कॉमन है कि आर्ट्स तो गर्ल्स के लिए है और साइंस बॉयज के लिए। तो इकरम बता रही है कि ऐसा जितने भी मिथ, जितने भी ये हमारे माइंड में, हमारे समाज में, या हमारे खुद के मन में इस तरह के विचार हैं, ये सब ठीक नहीं है, और इनको तोड़ा जा सकता है, और लोगों ने तोड़ा है। कि कोई हमें कहे कि आपकी आवाज उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि आप साइंस नहीं पढ़ सकते, ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है, ये बिल्कुल खारिज किया जा सकता है। इकरम एक हमारे सामने एग्जाम्पल भी है। और इतने जिस प्रकार के जितने भी समाज हमें बांधने की कोशिश करता है किसी भी प्रकार से, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो हमें शिक्षा के रूप में बांधने की कोशिश करता है, वो सब हम खारिज कर सकते हैं एज लड़की होकर भी। तो इकरम बता रही है कि ये सब चीजें हम खारिज कर सकते हैं, और इसको खारिज करने के लिए हमारे जो यात्रा होगी उसमें बहुत सारी रुकावटें आएंगी, लेकिन उन रुकावटों से घबराना नहीं है। रुकावटें हिस्सा होती है जिंदगी का, और जब हम उन रुकावटों को, उन चैलेंजेस को
आगे बढ़ते हैं, उनको पार करके हम आगे बढ़ते हैं, तो हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। फिर हमें और हिम्मत आती है, तो हम और बड़े बड़े जो रुकावटें हैं और जो बंधन है उन्हें और तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ लोग भी जुड़ते जाते हैं, जैसे कि इक्रम के साथ बहुत सारे दोस्त, मेंटर्स जुड़े। तो इसी तरह से यात्रा आगे बढ़ती जाती है, और ऐसे ही हमारे जो दोस्त है, हमारा जो हमारी परिवार है, उनके सपोर्ट के साथ हम अपनी जिंदगी की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन फेलियर्स से, जो हमारी जिंदगी में जो फेलियर्स होंगे, उनसे हम बिल्कुल ना डरे। वो जिंदगी का हिस्सा मान के चले कि वो हमें कुछ सिखाने आए थे। कोई बात नहीं, अगर हम एक बार हार गए जिंदगी में, हम उठे और आगे बढ़े। And always remember that challenges don't define you, it's the way that you respond to them. So, with that, I want to show you how other successful women, Indian women, were able to achieve the goals that you might think it's impossible, but other people are doing it, so might as well you. So, these are just some examples. First is Asima Chatterjee, who is the first woman to earn a PhD from an Indian university. So, this woman paved the way for the rest of women to pursue education and to pursue higher education and to make things possible, and is a really good model for all of you to also achieve your goals. We have Dr. Raman Parmala, who is a mathematician. So don't think that math is only for boys. It can be for everybody, especially women. We have Vidita Viadya, who is a professor and a neuroscientist, and she studies molecular psychology. So she tries to understand all these diseases that we have in our brains in a scientific way. And another example is Soumya Swamani Swam. I'm sorry, I'm butchering the name, but Swaminathan. Nathan. Swaminathan, who is a renowned microbiologist, and she studies all these different microbiology diseases. And one of the most important ones is tuberculosis. And she was one of the founding people who figured out how to test for it. And that is fantastic, especially for women in our communities to know all this information and all this knowledge, not just for ourselves, but also for the people around us. And I hope you see the bigger picture of why education is important. Yeah. थैंक यू इकरम। तो इकरम हमें बता रही हैं और हमें अपने ही लोगों से थोड़ा मिलवाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से भारतीय महिलाओं ने भी अपने जो सामाजिक और मानसिक जो बंधनों को तोड़ के आगे बढ़ी है। सबसे पहले आसिमा चैटर्जी, जिनमें एक बड़ा नाम है, जिन्होंने सबसे पहले पीएचडी की और महिलाओं को एक हायर एजुकेशन को, शिक्षा को प्राप्त करने का एक सपना दिखाया कि कैसे महिलाएं आगे जो हायर एजुकेशन में भी जा सकती हैं, पढ़ाई कर सकती हैं। और वो केमिस्ट्री, और नेक्स्ट जो है वो रमन परिमाला है, जिन्होंने जो मैथमेटिशियन रही हैं। और किस तरह से जो इकरम हमें बता रही हैं कि जो मैथ्स है वो केवल ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो केवल लड़के ही पढ़ेंगे, लड़कियों ने भी बहुत नाम किया है। और उनमें से एक हमारे सामने ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं वो एक बहुत बड़ा हमारे सामने एग्जाम्पल है। नेक्स्ट विदिता विद्या, जो कि प्रोफेसर हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में। इन्होंने भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट की तरह से काम किया है। इन्होंने जो बायोलॉजिस्ट जो भी जितनी बीमारियां होती हैं उन सब के बारे में अध्ययन करके, उनके साइंटिफिक जो रिसर्च करके उनके बारे में ये पढ़ाती हैं। और सौम्या स्वामीनाथन के बारे में हमें इकरम ने बताया कि ये अपनी माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, और इन्होंने बहुत ही इस तरह से साइंटिफिक जो डिस्कवरीज की हैं, जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट की दुनिया के बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण चीज़ों को इन्होंने खोज के निकाला है, जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं और जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है माइक्रोबायोलॉजिस्ट की दुनिया के, उनको इन्होंने इंस्पायर किया है आगे इस इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए और इस और कुछ नया जानने के लिए। थैंक यू इकरम। Thank you. So, with that, I want you all to dream big, start setting your goals, and take action. Every dream has to start with small steps so that you don't get overwhelmed. You want to be a doctor, a scientist, an artist, a dancer, whatever it is that you want to be, and whatever it is that you want to achieve. Write it down. Take small steps every day.
Try to read about it, learn more, see what is required to reach those goals, and ask questions. I want you to all stay curious and keep in mind the SMART goals, which basically stands for specific, measurable, attainable, relevant, and time based. And to walk through them each and every one. So, when you set your goals, you want it to be specific. You want to know what you want to achieve. So, for example, let's say you want to be a math teacher. That is your specific goal. I want to be a math teacher. What is measurable for that goal? Well, I want to start to achieve it. I want to start by getting good grades in math. To make sure that is achievable, you have to set goals that you can really reach. So, for example, you will start by studying 1 hour per day so that you get good at math. And after that, you need to make it relevant and meaningful to you. So, because I want to understand numbers, or because I want to learn how to deal with money, I want to know math. And last thing is you need to make it time bound, or you need to give yourself a deadline. You emphasize, you make sure that, let's say, you want to be a math teacher, then I will apply to a bachelor's degree in math in 5 years. So I need to pace myself to reach that goal. And that way you have a SMART goal. It's about the progress and not being perfect. Small steps take you a long way. Thank you, Ikram, for sharing this smart, this abbreviation into detail. So इकरम हमें बता रही हैं कि किस तरह से बड़े सपने देखे जा सकते हैं, लेकिन बड़े सपने का जो रास्ता होता है वो छोटे छोटे कदमों से होकर निकलता है। तो जो हम इतना बड़ा सोच के घबराए नहीं, हम छोटे छोटे कदमों के साथ बड़े सपनों का रास्ता तय कर सकते हैं। कि जो इकरम, जैसा कि इकरम ने बताया कि हर एक बड़ा सपना एक छोटे छोटे कई सपनों से या कई माइलस्टोन से मिलके बनता है। तो अगर आप जो भी बनना चाहें अपनी जिंदगी में, डॉक्टर, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, डांसर, या आपको टीचर बनना है, या आपको कुछ और नया कुछ शुरू करना है, आपको कुछ और बनना है अपनी जिंदगी में, तो आप उसके बारे में पढ़ें, अध्ययन करें, उसको समझने की कोशिश करें। उस विषय में आप देखें कि उस विषय को आगे समझने के लिए क्या क्या आपको नई भाषा सीखने की जरूरत है, क्या आपको कुछ लिखने की जरूरत है। जो उस सब्जेक्ट की, जो उस विषय की जरूरतें हैं, उनको आप समझें और अपने आप पर काम करना शुरू करें। और वो काम बहुत छोटे पैमाने पे भी हो सकता है। जब आप अपने आप पे काम करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने जो रिजल्ट्स जो हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं, तो आप अपने आप में भी बहुत बड़े चेंजेस देख सकते हैं। और आप हमेशा क्यूरियस सवाल, प्रश्न पूछते रहें लोगों से, अपने शिक्षकों से। और अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं बार बार, इसका मतलब आपके माइंड में, आपके मन में, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। जब दिमाग में कुछ चलता है तो प्रश्न जो है वो स्वाभाविक ही अपने आप आ जाते हैं और आपका पूछने का मन करता है। तो जो एक अच्छा विद्यार्थी होगा वो बहुत प्रश्न पूछता है, क्योंकि उसके मन में कई सारी बातें चल रही होती है। तो प्रश्न पूछने से ना झिझके, और प्रश्न की प्राप्ति जब होगी जब आप बहुत सारा अध्ययन करेंगे या कुछ नए नए विचारों को पढ़ेंगे, समझेंगे। समझना भी बहुत जरूरी है, पढ़ने के साथ समझने की भी जो विद्या है वो धीरे धीरे समझ में आए। बार आपको लगेगा कि पढ़ लिया, समझ नहीं आया, लेकिन जिस तरह से कि टाइम बेस्ड, और हम टाइम के साथ हमें सब चीजें समझ में आने लगेंगी। और ये जो बहुत अच्छा जो इकरम ने हमें समझाया, स्मार्ट का जो एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, वो मैं आपको बता देती हूँ। कि एस से वो बता रही है कि स्पेसिफिक होना चाहिए, हमें स्पष्ट होना चाहिए अपनी जिंदगी में कि हमें क्या करना है, हमें कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ना है। उसके लिए हमें स्पष्ट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसको हम क्लैरिटी भी बोल देते हैं अपनी आम भाषा। स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। दूसरा एम है जो कि मेजरेबल है। इसका मतलब है मापने योग्य होना चाहिए। जो भी हम अपना काम कर रहे हैं, इसको हम किस तरह से मापेंगे। क्या हम इसको इकोनॉमिकली माप रहे हैं, या फिर हम इसको माप रहे हैं कि हमें बस दिल से अच्छा लगना चाहिए, या फिर हमें पैसा कमाना है। तो सबके मापने के जीवन के तरीके और शिक्षा के तरीके या आगे बढ़ने के तरीके जो भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम उसे माप सकें।
और अटेनेबल, प्राप्त करने योग्य से मतलब ये नहीं है कि हम अपने दायरे में ही सोचें। इसका मतलब है जो भी हम सोच रहे हैं उसको किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं, उसका क्या रास्ता होगा, उस रास्ते को हम सोचें समझें और उस रास्ते को भी निकाल के लेके आए। तो वो प्राप्त करने योग्य जब भी बनेगा सपना, जब हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में समझ रखेंगे। और है रेलेवेंट होना चाहिए, संबंधित या प्रासंगिक होना चाहिए, कि आपको वो लगना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं, जिस बारे में जिस बारे में अध्ययन कर रहे हैं, वो आपके मन को अच्छा लग रहा है, आपको उसको और पढ़ने का मन कर रहा है। तो सबसे पहले वो रेलेवेंट या संबंधित, आपके संबंधित होना चाहिए। फिर वो आप उसकी पूरी दुनिया में जाएंगे और दुनिया से बातचीत करेंगे। पहले वो सब्जेक्ट या वो जो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए और आपके मन को और दिमाग को वो समझ में आना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट है टी, जिसका मतलब है टी का एक्सप्लेनेशन हमें इकरम ने बताया, टाइम बेस्ड। उसका मतलब होता है समय सीमित, कि जो समय को भी हमें मद्देनजर रखना होगा, कि अगर एक बैचलर डिग्री 4 साल में है, तो यूएस में अगर आपको बैचलर डिग्री करनी है तो वो 4 साल की होती है, 3 साल की होती है, या हमें मास्टर्स करनी है तो उसके लिए बैचलर हमें 4 साल की चाहिए या 3 साल की चाहिए, या हमें 11th के बाद कुछ परस्यू करना है या 12th के बाद करना है तो उसमें 11th में कितने प्रतिशत हमें अंक चाहिए या 12वीं में कितने प्रतिशत अंक चाहिए, उसकी पूरी तैयारी हमें पहले ही करनी होगी। क्योंकि कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो मांगते हैं कि हमें 75% आपके अंक होने चाहिए, 75%, तभी आपको उसमें एंट्री मिलेगी, वरना आपकी एंट्री वहां पे नहीं हो पाएगी। तो अगर आप पहले से तैयारी करेंगे, टाइम बेस्ड प्लानिंग जो आप करेंगे, तो आप अपने गोल को स्मार्टली अचीव कर सकते हैं, और आपको कोई भी रुकावटें जो आएंगी वो स्मार्ट तरीके से अगर आप उसको प्लान करेंगे तो सब चीजें मुमकिन है। थैंक यू इकरम। Thank you. So always remember to dream big because your dreams can come true when you turn them into clear steps. And I like this quote that I would love to share with all of you, and that is, to educate a woman is to educate an entire generation. And when you study and when you grow, your knowledge just doesn't just stop with you, it creates that ripple effect. And it reaches other people that are surrounding you that are far beyond. You never know where it can go. And you might inspire your younger sibling, your sister, your friends. You can inspire them to do not just learn, but also learn new skills and achieve goals and inspire them to dream big, just like you will. That is what mentorship is all about. Learning from others and helping others learn from you is the main benefit of education. And every time you share what you know, you make the world around you a better place. So you, as an educated woman, will be able to uplift others, your family, your community, and even your country, and make sure that it doesn't stop with you. You share that knowledge with others, and that way everyone else grows. थैंक यू इकरम। तो इकरम हमें बता रही हैं कि जब एक महिला जब शिक्षित होती है, वो ना केवल अपने आप को आगे बढ़ाती है, वो पूरे समाज को, पूरी पीढ़ी को शिक्षित करती है। किस तरह से वो अपने घर परिवार आसपास और जो महिलाएं हैं और जो लड़कियां हैं और जो समाज के बहुत जो जितने भी लोग हैं उनको भी प्रेरित करती है, क्योंकि महिला का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है हमारे समाज में। और जब महिला आगे बढ़ती है, एक लड़की जब पढ़ने जाती है, कभी अपने गांव छोड़ के या अपने शहर को छोड़ के दूसरे देश में जाती है, जितना भी होता है वो, और हाँ, कितनी लड़कियों के लिए, हजारों लड़कियों के लिए वो प्रेरणादायक होता है और हमें उससे प्रेरणा मिलती है। और वो शिक्षित जो महिला है, वो ना केवल अपने परिवार को कंट्रीब्यूट करती है, उसमें अपने परिवार के सहभागी सहयोग करती है, वो अपने पूरे समाज को आगे बढ़ाती है, वो अपने दोस्तों को आगे बढ़ाती है, अपने पूरे परिवार को आगे लेके बढ़ती है। इसी को हम रिपल इफेक्ट, जो इकरम अपनी भाषा में कह रही है कि एक रिपल इफेक्ट होता है, जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप और लोगों को भी साथ लेके चलते हैं, क्योंकि आप मानते हैं, क्योंकि आपकी जो जर्नी है वो भी अकेले नहीं हो पाती है, आपके साथ बहुत लोगों का साथ होता है। और इसी तरह से आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपके स्वाभाविक मन से आता है कि हम भी और लोगों का साथ दें। इसी पूरी जो इकरम ने इसे रिपल इफेक्ट का नाम देके हमें समझाया है। और यस यस इकरम, फॉरवर्ड। Yes. So to wrap it all up and reflect on everything that we learned today, what I want you to come out of this presentation is that know that education gives you the strength, the choice,
and the voice to be who you want to be. You have everything that it takes to make a difference, and you are capable. Uh, One of the inspiring women that I truly look up to, even though she's way younger than me, is Greta Thunberg. And I love this saying from her, where she says, I have learned you are never too small to make a difference, and each and every one of you is capable. So I want you to repeat after me, and maybe you can translate it and repeat it in your language because it makes a more impactful power. Know that I want you to say, I am capable, I am strong, and I can make a difference. And I hope that each and every one of you is inspired to be educated and to reach your goals, no matter how small or how big they are. सो इकरम ने हमें बताया कि कैसे शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। वो ना केवल हमें व्यवसाय के मौके खोलती है, लेकिन हमें सबसे महत्वपूर्ण हमें एक आवाज देती है। हमें सही गलत क्या हम जो भी डिसीजन ले, चाहे वो सही हो गलत, तो हमें कम से कम एक मौका देती है कि हम अपने डिसीजन जो, और हमारे सामने वो बहुत सारी चॉइसेस खोल देती है। जो अगर हम शिक्षित होते हैं तो हमारा मन है आज हमें जहाँ पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, जिस शहर में रहना है, हम वहां जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम कमा सकते हैं, हमारे पास एक विचारधारा है, हम उसको शेयर कर सकते हैं। तो वो ना केवल आपको शिक्षित करती है, वो आपको एक चॉइसेस के साथ, भरपूर चॉइसेस के साथ आपको जिंदगी मौका देती है। आप आगे बढ़े, जैसा आप चाहें, जैसा आपकी इच्छा हो, आप अपनी इच्छा अनुसार जा सकते हैं। और इकरम ने बताया कि वो ग्रेटा थनबर्ग से बहुत प्रभावित है। उनका एक कोट उन्होंने यहाँ मेंशन किया है। वो बहुत छोटी है उम्र में, लेकिन वो उनसे प्रभावित है। मैं इस कोट को हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ। आई हैव लर्नड यू नेवर टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस। ये एक कोट है, इसके हिंदी अनुवाद है, मैं सक्षम हूँ, सॉरी, इसका हिंदी अनुवाद है, मैंने सीखा है कि बदलाव लाने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है। क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग वो बहुत छोटी है, और वो पर्यावरण के लिए काफी काम करती हैं। और उनका मानना है कि कोई भी बदलाव लाने के लिए उम्र कोई निर्धारित नहीं है। आप किसी भी उम्र में कोई भी बदलाव ला सकते हो, चाहे वो अपने निजी जिंदगी में हो, चाहे वो समाज में हो, दुनिया में हो, देश में हो, आप कभी भी बदलाव ला सकते हैं। और लास्ट में इकरम हमें ये भी कहने के लिए कह रही हैं कि उनका वो मानती है कि अगर हम ये साथ कहेंगे तो एक अच्छी भावना हमारे साथ जुड़ और इंस्पायर होंगे। इंग्लिश में ये इस तरह से, केपेबल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन मेक अ डिफरेंस। और अगर हिंदी में हम आप सब लोग हमारे साथ कह सकते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं, मैं बदलाव ला सकती हूँ, ला सकता हूँ। मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत वो हूं, जो मैं एक बोलिए रुचि, बोलिए। अगर हम सब साथ में हाँ, बोलना, जो एक हिंदी में है। हाँ, मैं हिंदी में वापस एक बार और रिपीट कर देती हूँ। मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं, मैं बदलाव ला सकती हूँ, मैं बदलाव ला सकता हूँ। आई एम केपेबल, स्ट्रॉन्ग, आई कैन मेक अ डिफरेंस। Yes, you can. मुझे और ये मुझे जो लगता लिखा है कि है, जो कोट है, उसमें जो लिखा है कि आप इतने छोटे कभी नहीं हैं। मैंने सीखा कि आप इतने छोटे कभी नहीं हैं कि आप बदलाव ना ला सकें। तो हमारे आसपास बहुत लोग हैं जो धन पद हर तरह से बहुत छोटे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बदलाव लाए हैं। सो इकरम, हम लोग आगे चल सकते हैं अब क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। और मेरा निवेदन है सभी लोगों से कि वो आज क्वेश्चन करें इकरम से। लास्ट 10-20 जितने भी मिनट्स हमारे पास हैं, इकरम से क्वेश्चंस करें। और इनोवेटिव हाउस की साइड से भी और गवर्नमेंट स्कूल खैरतर की तरफ से एक एक जना इकरम को लास्ट में थैंक्स करें। तो इकरम, थैंक यू सो मच। Thank you. So I'll just wrap up with if you have any questions, if you remember the question that I asked you at the beginning of this talk, who do you want to be? If any one of you would like to share and talk about your experience and what you're doing to achieve that goal, I would be more than happy to listen and to help guide you. And I just want you to know that education is your superpower and no one can take it away from you. So don't be afraid to dream big and to follow what you think is possible. Thank you. इकरम, हाँ, इकरम ने अब क्वेश्चंस
आंसर्स के लिए हमें बोला है कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप इकरम से सॉरी पूछ सकते हैं, और इकरम को बहुत खुशी होगी वो सवालों के जवाब देते हुए। और आपके मन में जो भी जिस तरह के, अगर आप उनके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं कि मैं बड़े होके ये बनना चाहती हूँ, मेरे ये सपने हैं, और आप अपने चैलेंजेस के बारे में बता सकते हैं कि मैं ऐसा सोचती हूँ लेकिन अभी ये कुछ रुकावटें हैं, अगर आप हमें कुछ बताएं कि हम इनको किस तरह से पूरा करें, या और भी कुछ आपके मन में जो चल रहा है एज अ रिफ्लेक्शन, आपने पूरी ये सेशन अटेंड किया, अगर आपके मन में कुछ सवाल है, कोई विचार है, तो आप वो साझा कर सकते हैं। और इकरम हमें बता रही है कि जो हमारी सुपर पावर है, जो पावर है हमारी, वो एजुकेशन है, क्योंकि वो कोई भी वो हमसे वापस नहीं ले सकता है। तो जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो हमारे साथ रहती है, इसलिए वो हमारी सुपर पावर है। अगर अब आप सवाल का सिलसिला अब हम शुरू कर सकते हैं। और जो सवाल पूछना चाहता है वो हिंदी में भी सवाल पूछ सकता है, हमारे पास रुचि है उसको अच्छे से ट्रांसलेट करने के लिए। तो हिंदी में भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको कोई एक्सप्रेशन है आपका, कुछ कहना चाहते हैं आप, तो वो हिंदी में भी कह सकते हैं। इंग्लिश में कहें कोई बात नहीं, हिंदी में भी कह सकते हैं आप। कोई कोई स्टूडेंट, शर्मिला अगर जुड़ी हुई हैं तो वो अपनी बात कह सकती हैं, शर्मिला। और अगर वो नहीं जुड़ी हैं तो रिंकी खातून हमारे साथ हैं, वो कह सकती हैं। युक्ता व्यास हमारे साथ हैं। मनीषा कुछ कहना चाहें, हिंदी में कहना चाहें तो हिंदी में भी कह सकते Am I Don't be shy, audible, sir? please. हैं। हाँ हाँ, यू आर Yes. ऑडिबल। रिंकी खातून, Okay, आप I अपना just want कैमरा to. और शुरू कीजिए। कैमरा कैमरा, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, Am I visible now? यस। Okay. Okay, बस so बस। I just want to ask a question to Ikram ma'am. Go ahead. Hi, hi, Rinky. Nice Uh, to meet you. hello, ma'am. It's very nice to meet you. And I Likewise. want to say, I want to say, like, I can clearly see what beauty with brain look like. You are very talented, and it's very nice to meet you. Uh, You're so sweet. It takes one to know one, love. so this is So Rinki Khatun. likewise for you. Okay, so this is Rinki Khatun from India, and I have a question. When you was when you were telling, I was writing questions, so I can ask you, ma'am. Please go for it. Mhm. Okay, in India, we observe that household duties and ancient social norms like early marriage consistently overshadow girls' education, leading to high dropout rates. My question is Mhm. twofold: how challenging it is to translate a girl's education into her unquestionable right to make her own decision without fundamentally changing deeply conversative family and communicative views. At what innovative community based strategies are most effective in overcoming the barrier between school and restrictive home environment, because we live in a nation which is definitely rich in culture, rich in varieties, but also rich in misconceptions. So how we can handle it? Absolutely. And very, very fantastic question. So the one way that I would see it is an issue. Early marriage, especially marrying girls off very early, uh, puts them out of school. That is absolutely correct. And there is a trend that shows once girls are married, it is less likely for them to continue their education because they get busy with the housework, with the children, with other social norms that are related to each culture. So it does pull that privilege away from these girls. However, um, it should not stop a woman from achieving her goals. Just because, let's say, okay, we do have an issue with early marriage, we need to educate these communities. Marriage should not be a stopping point for a woman to stop dreaming and stop pursuing her education. It actually should be a plus. Your partner and your husband and your children are your support system later on.
So it would be a good way for you to lean onto them as they will lean onto you. Um, I also would like to say that there isn't one way for a woman to be educated. It's not a one formula that fits everyone, right? Each person can be educated with their own means. And thankfully, we live in a world right now where information is accessible by just logging into the internet, which is also a privilege. Not everyone has internet connection. Not everyone has electricity. Not everyone has a computer. So that is also an economical thing and a social thing. However, information is accessible, and you can find the resources that are around you. Worst case scenario, if you can find them, go to the nearest library to you if you have one. If not, find someone that has a book and borrow it. Don't stop yourself. Always continue learning. Always continue being curious. Even if you have obstacles, like the ones that you mentioned, it shouldn't be something that stops you from pursuing your dreams. And let's say it doesn't happen right now, you will find a way sometime later. You will find a way when you um, grow older, for example, or just past that time period where you have that struggle. Not that it's belittling you. Every one of us has their own struggle, but if there is a will, there is a way, and there is always a will. Every single girl out there has a will to be educated, empowered, and following her dreams, and no one should take that away from you. Ruchi, define. I hope I answered your questions. I'm not sure if I followed the other one, but please feel Yeah. free to ask more. Yeah, yeah. Okay, thank you, ma'am. Thank you very much. Of course. Thank you for asking. Nice to meet Thank you you, so Rinki. Thank you. Ruchi, define, please. much for In short. In thank you. short. Thank you so much for explaining such a wonderful explanation. I'll try to do my best in translation. So इकरम हमें बता रही हैं कि किस तरह से पहले रिंकी ने जो हमें सवाल पूछा, उन्होंने पूछा कि समाज में बहुत सारे बंधन है, उनमें से एक बंधन है कि एक जल्दी शादी कर दी जाती है लड़कियों की, स्पेशली भारतीय समाज में। तो उससे हम उसका सुझाव, उसका समाधान कैसे करें? अगर किसी की शादी हो जाती है तो किस तरह से इस चीज का समाधान या उस पर उनके विचार किस तरह से हैं? तो इकरम ने बताया, शॉर्ट में मैं बताऊंगी कि जहाँ चाहा है वहां रहा है। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी इस आंसर की, कि अगर आप में विल पावर है, आप में इच्छा शक्ति है, तो आज का जो जो युग है वहाँ पे इंटरनेट भी है, लोग भी हैं, और अगर कोई लड़की जो हमारे आसपास है तो उसके पास उतने बेहतर शिक्षक हैं, उसके पास स्कूल है, उसके पास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, परिवार का ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो उसको समझ रहा होगा, जो उसको सुन रहा होगा। हो सकता है उसका दोस्त हो सकता है उसका परिवार में भाई बहन, उसे ढूंढे, क्योंकि जो इच्छा शक्ति है उसको एक्शन में लेके आए। तो इकरम ने पहले भी इस वर्ड का यूज किया था, एक्शन। इच्छा होने के बाद एक्शन में उसको हम जिंदगी में किस तरह से उसको एक्टिव बने और उसको लाइफ में हम लेके आए, एक्शन में मोड में हम लेके आए, तो सब चीज मुमकिन। इकरम ने बार बार इस जिक्र किया है कि जो शिक्षा है वो आप छीन नहीं सकते। अगर आप शिक्षित हो गए, एक बार आपके विचारों में क्रांति आ गई, फिर आप अपने आप ही अपनी मंजिल तय कर लेंगे, आपको साथी मिलते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। पर जो पहली शर्त है कि एक बार मन लगा के आपको शिक्षा को ग्रहण करना होगा, फिर शिक्षा आपको बहुत कुछ बदले में दे जाएगी, जो कि आपकी सोच के भी परे है, वो है वैचारिक क्रांति। और Okay. भारत में बहुत सारे पति और सास भी अब हैं जो अपने बहुओं को पढ़ाना चाहती हैं, तो भारत आगे बढ़ रहा है। तो इंडिया इज प्रोग्रेसिव, विक्रम। देयर आर मेनी पीपल इन द फॉर्म ऑफ हस्बैंड एंड मदर इन लॉ, दे वांट डॉटर इन लॉ शुड स्टडी। Yes, no, absolutely. And I met so many beautiful Indian women who are actually paving the way for that. And regardless of the social norms and the culture that there is in India, things are changing, and people are realizing how important it is to educate women. Okay. One of my friend, Mr. Baldevaram, Dr. Baldevaram, assistant professor from Hanumangarh, Rajasthan, wants to share something. Baldevaram, please switch on your camera if it is possible. आप
हाँ। नमस्कार आप सभी को। नमस्ते। इस हाँ, सबसे पहले तो सब धन्यवाद इकरम जी को, रुचि मैडम को, अंकित जी को और दीपक जी को। असल में मैं एक सेवानिवृत्ति समारोह है ना, उसमें एक कार्यक्रम में था, थोड़ा साइड में होके बात कर रहा हूँ, थोड़ा लेट जुड़ा मैं। तो मुझे एक स्लाइड बहुत अच्छी लगी और मैं उसमें कुछ बातें जोड़ना भी चाहता हूँ कि बड़े से बड़े काम की शुरुआत है वो छोटे से छोटे स्टेप से हो सकती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसमें एक मेरा सवाल भी है। सवाल तो क्या है, मैं एक सलाह चाहता हूँ उनसे, मशवरा चाहता हूँ कि हमारे सामने एक बड़ी समस्या ये है कि वर्तमान में जो एक युवा पीढ़ी है, जिसको हम जैन जी कहते हैं, उसके पास सबसे जो कमी है वो धैर्य की कमी है। तो उन्हें अगर कोई 5 या 7 वर्ष का कार्यक्रम है, किसी काम की प्रोसेस है, तो उन्हें पूरा रूट मैप एक साथ चाहिए। चाहे वो यूट्यूब पे इसके लिए ढूँढते हैं या हमसे इस बात का खाका माँगते हैं। यानी उन्हें अगर कहीं 500 किलोमीटर की यात्रा करना है तो पूरा रास्ता एकदम साफ चाहिए। जबकि स्वाभाविक बात ये है कि आप 2 किलोमीटर चलेंगे तो आगे का रास्ता दिखाई देगा। तो इसमें अगर कोई सुझाव उनका हो कि कैसे मैनेज किया जाए, उनकी अपेक्षाएँ थोड़ी अलग है और वास्तविकता थोड़ी अलग है। ये ठीक है कि छोटे से छोटा कदम है वो आपको आगे बढ़ने के लिए और रास्ता दिखाता है, आगे का मार्ग है वो प्रशस्त करता है। लेकिन जिसे पूरा रूट चाहिए और एकदम पूरा खाका चाहिए, उसके लिए बात करना और बात उसको बताना थोड़ी-सी ये मुश्किल रहती है। तो थोड़ा-सा मैं लेट जुड़ा, इसका मुझे थोड़ा दुःख है क्योंकि मैं कोई आज बात नहीं। पहले से उत्सुक था, लेकिन मैं किसी कार्यक्रम में आया था। तो बहुत ही प्यारा सवाल, धन्यवाद। बहुत ही हाँ, प्यारा सवाल। रुचि, प्लीज ट्रांसलेट टू इकरम। Okay. Yes, please. So, Ikram, there's a question from a teacher, assistant professor. He got very fascinated with that slide, that small step that you have showed. And the question is, he's asking basically the new generation, Gen Z especially, they have no patience. They want instant answers. They want instant pathway. They just want to, maybe because they are influenced by social media and there's so other influences in the society. Maybe they want to be famous instantly or they want to pursue what they want to, but life is really different. The reality is really different. It is not like that. So he's asking, can you give some, like, share your opinions and can you give some tips to this new generation how to be patient? Because I know PhD is also a long journey and you have been to this whole journey of bachelor's, master's, and then PhD. So can you give us your opinions and tips to all of us? Yeah. Absolutely. And thank you so much for asking that question. It's a problem that we see it everywhere. This new generation is really hasty, and they do want results very quickly. But what I would like to share is 2 points. So, first of all, don't be deceived by the social media craze and all these fast videos. What they show you is not the process that works like this. That is hundreds of hours of work that is only shown in a short clip that you see and think that it's possible that fast, but it's not. It is an illusion, and a lot of us fall into it. I think it takes time for people to understand that um, people are meant to go through time consuming things to learn the skills that are needed in order for them to achieve what they want to achieve. You have to put in the time and the effort and the blood, sweat, and tears, right? All of that. So, for example, and I'm sure a lot of the professors on this call would also agree with me on this, in order for people to achieve their degrees, it might look like a degree to you. Oh, this is so easy. They got it. It must not take that much time, but actually, it takes time, and that's okay. You have to go through it. So, for getting a bachelor's, that's 4 to 5 years. For getting a master's, that's at least 2 years. PhD, I'm right now on my fourth year. It might look, oh, look at her, she got it so fast, but in reality, that's not the case. So do ground yourself and understand that things do require time and the best skills. So, for example, when you talk about a neurosurgeon, for that surgeon to learn those skills to be an amazing surgeon, he needs or she needs a long period of time. That's 12 years, that's 15 years of training, that's 20 years of training. And there are no shortcuts. You have to go through it. You have to
gain those experiences and go through the steps and the failures and rising up again and learning again and again and again in order for you to reach that final expert level of surgery or whatever goal you're looking for. So putting the time in learning is a fundamental. That's how human beings are have been, and that's how it always will be. No matter how much social media shows you these fast clips, do remember and keep reminding yourself that in order for me to reach that, I do need to put in the time and the effort. But enjoy it, right? It's not a waste of time. Enjoy that process. Yeah. रुचि शॉर्ट में थैंक यू सो आंसर थैंक यू सो मच इकरम। इकरम ने हमें बहुत ही बेहतरीन तरह से जवाब दिया कि सोशल मीडिया पे जो हमें क्लिप दिखाई जाती हैं 1-2 मिनट या उससे भी कम समय की रील्स हमें कहते हैं, वो पूरा जो प्रोसेस है, वो यात्रा का पूरा सार हमें नहीं दिखा, वो यात्रा का पूरा जो जर्नी है वो नहीं दिखा पाती, हमें छोटे छोटे क्लिप्स दिखाते हैं और हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं, कभी कभी हम भ्रमित भी हो जाते हैं। लेकिन किसी की जिंदगी से प्रभावित, इंस्पायर होना अच्छी बात है, लेकिन हम सोचे कि हम भी ऐसे 2 क्लिप्स बना के कुछ कर पाए। तो इकरम ने बहुत ही अच्छा बेहतरीन एग्जाम्पल रखा है कि दुनिया के या एक इंडिया के बेस्ट न्यूरो सर्जन अगर आपको बनना है तो उसमें आपको 15 साल का या 12 साल का या 10 साल का समय देना ही पड़ेगा। समय के अलावा कोई विकल्प नहीं है शिक्षा को बेहतर तरीके से अर्जित करने का आज के टाइम में भी, जहाँ एआई है हमारे पास, जहाँ बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन सीखने में समय लगता है। आज भी हो सकता है वो समय हमें टेक्नोलॉजी के सहारे हम बेहतर तरीके से सीख पाए, लेकिन हमें समय देना पड़ेगा। डिग्रीज आज भी 4 साल की है, कुछ डिग्री 1 साल की है, 2 साल की है, पीएचडी करने में 4 से 5 साल लगते हैं। उसका कारण है वो 4 से 5 साल के हैं और वो बहुत ही शिक्षाविद ने समझ से और वो पूरा तय किया है। तो समय का कोई विकल्प नहीं है, समय आपको देना होगा और जितनी भी जो भी आप यात्रा पे हैं उसके पूरे प्रोसेस को आप इंजॉय करें, उसमें सीखें, ना कि शिक्षा से, लोगों से, आसपास जो भी विचारधारा आपके आसपास है, नए नए लोग हैं, सबसे आपको सीखने का मौका मिलता है। इसलिए ये जो समय है इतना लंबा होता है और आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य का भी कोई विकल्प नहीं है, पेशेंस से ही सब काम होगा। तो आप अपना धैर्य कायम रखें और अपने जीवन यात्रा पे चलते रहें। मनीषा मैं चाहता हूँ आप भी कुछ सवाल करें। मनीषा नमस्ते सर, नमस्ते मैम। मैम सवाल तो नहीं है, लेकिन यही कहना चाहूंगी कि मैम ने जो भी बताया बहुत ही अच्छे से समझाया था। और जो मैम ने बताया ना कि रुचि मैम ने बताया क्या कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कोई ट्रांसलेट बात कर नहीं। दूंगी। हाँ आप आराम से बोलिए मनीषा, कोई दिक्कत नहीं है। यस हाँ, जैसे आज सर ने हमारी क्लास में बताया था कि तब जब जागो तभी सवेरा। तो मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे रिंकी दीदी ने एक सवाल पूछा था लड़के की, हमारी भारतीय संस्कृति में जल्दी शादी कर देते हैं। तो इसके लिए कहना चाहूंगी कि अगर हमारे पास 1% भी हमारे लड़ने का मौका मिले तो हमें लड़ जाना चाहिए। और गुड। जैसे मैं सबसे ज्यादा जो इंस्पायर हूँ ना, वो रुचि मैम से हूँ, क्योंकि रुचि मैम हमारे जब कॉलेज में आई थी तो मैम ने बताया था कि मैम ने 0 से स्टार्ट किया था सब। 12th के बाद जब मैम ऐसे हो गए थे, फिर मैम बाद में जागे, तो जब जागो तभी सवेरा। और जैसे सोनल और सोनल मैम ने बताया था, सोनल मैम ने छोटे से शब्दों में अपनी सारी बातें कह दी, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सोनल मैम, और थैंक यू, बस यही कहना चाहूंगी। यस रुचि प्लीज ट्रांसलेट So, फॉर इकराम। Ikram, are you there? Yes, I'm here. Sorry, just Okay. many. Okay, so I'm translating what Manisha has shared with us. She got really inspired by your words, and she's now over lots of words to express them into words. But in one quote, she's expressing that she got that energy and that feeling from your slides, from your presentation. That whenever you it's it is said like jab savera, so wake up, it's your morning. So you never feel like your right or your left brain, whenever you feel you can start any time in your life. Are you I'm audible to you? I'm sorry, you're cutting off. Ruchi, Can you repeat your that? voice is breaking. Mm-hmm. Now I'm audible? Is it fine now? Yes Yes. Okay.
So Manisha is really by your expression, by your slide, and she's out of words. She don't know how to explain into the words, but she's really smiling, and we can see that smile that she's full of, inspiration, and she wants to do something in her life. Mhm. And she's saying in one line that what she learned from your words, and that is, whenever you wake up, it is your morning. In Hindi, it is known as "Jab jago tab savera." So it is never too late to start something. It is said, it is a famous quote, and Manisha is repeating this quote and putting that quote in front of you. So she get that feeling after listening all your talks and all the slides. So she's really happy and she feel inspired. Thank you so much. I am so happy to hear. Thank you. And that's the whole purpose, that's the whole point. I'm very Yes. glad, and I look forward to hearing about all the different things that everyone here will be doing. One of my friend Antra is here. I would like to invite her to share her reflections. Oh, hi. Hi, Ikram. Hi, Ruchi. Hi, I'm Anitra. hi. Hello. Okay, I'll just share you how I came to be in contact with the College of Kerala and Deepak sir. Ruchi, the work that you have been doing, like, translating for Ikram, that's exactly where I came in. I was holding a small little workshop of functional English, like how to talk in English, to the first generation learners who have Hindi as their base, as the mother tongue. So, what I loved about the college and Deepak sir and principal ma'am is that they are already taking the effort to make the education uh, more practical, more useful. And that's how I joined the Kethel College. And let me be. It's a fun fact. My degree in MSc is in zoology. Okay, nothing to do with English. But as and when I was learning, this is my own personal journey. I went back to the grassroots. मैं गांव में वापस गई, and that's how I figured out that what are the real online challenges. I mean, the smart definition that you gave, hats off. That's beautiful. That's really inspiring, Ikram. Thank you so much for sharing it with us. But that's how people like Deepak sir, principal ma'am, they are taking the steps already. So that's where I came in. Taking a language of a language which is known for its literature, or for its flowery thing, how to make it practical, how to make it more accessible, like what Ruchi is doing for you right now. So I think hats off to that. I had another friend, Sharmila, who again I met, when she was in a 12th grade. She fought her family. I don't know if she's still there. I thought that she could share her story all by herself with you, but I don't know if she's there online or not. But the simple act of she made a decision that she wanted to go to college, and there was no Mm. college in the village, so she had to come to the city. And the journey, so small little steps. I think she was participating, and I'm sure you've inspired her so much. So thank you so much, Ikram. Thank you so much, Ruchi. You're doing a wonderful job. And thank you so much, Deepak sir, principal ma'am. Yeah, thank you. Yeah. Okay. Thank you as well. Thank you. Yeah. Okay. Any other questions Thank you so or any much. other experiences if someone want to share? So I also want to say something to Ikram. It was I never ever imagined, just I now I'm recalling the train journey that we were going. I don't know where we were going that, but it was such an incredible talking to you. I was sleeping and I just suddenly woke up and I saw you. You are such a charming person. I just start talking to you, and I never imagined that we'll meet like this and you'll inspire so many girls, and it was wonderful. I try my best in translation, and it was my first time. I was very nervous, but yeah, I think we can do it in future also. This was really inspiring session, and I also feel really inspiring. I also want to pursue PhD, and sometime I feel very skeptical about it, whether to go for it or not. There are so many responsibility. I'm a mother also, but I feel like little steps. Now I'm recalling that quote also, like little steps you have to take. Little So steps. maybe, Yeah. yeah. So you inspire me also again to pursue higher education. I know it is really difficult, but yeah, I will try my best. And one day I'll share with you that I got enrolled in some good school.
Thank you so much, Ikram. I look forward to that, and I really hope you do. Please follow your dreams. You would be surprised how many women who are mothers who are also pursuing their PhDs. So it's not a stopping factor. And as long as you have a good support system, Yeah. your husband is wonderful. I'm sure he would be more than happy to also support Yeah. that. And yeah. No, and absolutely. And I'm also very honored. That encounter in the train. Who would have thought? It's a small drop in the ocean. It's such a small world, and it, I love it when these souls just recognize each other, and I know my soul recognized yours. So I'm very honored to know you, to keep in touch, to have this connection, and now to meet all of you. So thank you. Thank you so much for having me. Any other question? One of my friend Ankur Yes, Saini yes, is please. here and want to ask one question. Yeah. Please, Ankur, Please. unmute yourself and switch on your camera, please. Ankur, Ankur, please switch on your mic. Ankur, you have Ankur to. Saini, please unmute Your yourself. your mic is mute, so we are not able to listen you. Please, हाँ yeah, तो yeah, Okay. now, नमस्ते yeah. मेरे सर एक सवाल है अधिकतर भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की जो लड़कियां होती हैं वो 1-2 साल मेहनत करती हैं और जब वो सफल नहीं हो पाती तो कहने लग जाती हैं कि हमारी किस्मत में यही था Hmm. और मतलब वो उनका मानना ये होता है कि हमारी किस्मत में बस यही था हमसे आगे कुछ ऐसा नहीं होगा तो उनके लिए थोड़ा सा मैं मैम से कुछ क्या कहेंगे बहुत ही अच्छा, बहुत ही सही सवाल. हाँ, yes, Ruchi, please translate. So there's a question in the line, and he's saying that in rural India, specifically in rural India, the young girls or women, those who are just started their career or pursuing some degree, or they're just entering in the higher education or education, they often feel some failures, like they often get some failures, and they got discouraged by some failures or some obstacles, and they feel that this is our destiny, that we can't succeed in life, we can't get the we can't achieve our goals just because this is our destiny, this is written in our destiny. So if you have any views on this, so it will be glad for us, you can share your Oh, views. I love this question. So, as a woman of faith, I am of the Muslim faith, and we also believe in destiny and that there are things that are written from us by God, and things are supposed to happen a certain way. However, we also believe that in order for these things to happen, you need to take action. So, whatever is written for you, it will happen. But if you don't take action, how are you going to reach it? So, for people that think that as soon as they're hit with an obstacle, this is it, I failed, I cannot move forward, this is what's written for me. I think the mindset should change here, right? You shouldn't think that. Why would you think that that's your destiny when we don't know our destinies, right? We just know that we need to reach somewhere. But in order for you to reach it, you have to put that action there. You need to set your expectations and have those high expectations. Don't be afraid to have big goals and big achievements. Just because you think the obstacles are too hard to go over doesn't mean that's where your journey ends, right? As long as you're breathing, as long as you're still alive, you should continue moving, you should continue pursuing, and you should never stop, even when the obstacles are difficult. And I hope people understand that. And I know destiny is true, God is real, and things do happen according to what He believes and what He thinks is right for us. But we need to take those steps in order for us to reach there. Thank you, Ikram. I hope तो that इकरम ने answers the question. या थैंक यू सो मच. तो
इकरम ने हमारे साथ ये अपने विचार साझा किए कि वो भी ईश्वर में मानती है, वो भी किस्मत में मानती है, लेकिन वो ये भी मानती है कि अपनी किस्मत को हम खुद भी लिख सकते हैं। हमारे समक्ष बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं, बहुत सारी चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन वो जीवन का हिस्सा है, वो आएंगी। हम अपनी जिंदगी में चाहे शिक्षा ग्रहण करें, चाहे अपने जीवन यापन करें, चाहे किसी भी तरह का हम जीवन जीते हैं, चुनौतियां छोटी बड़ी हर प्रकार की हर जीवन में आती हैं, लेकिन उसको हम चुनौतियों से डरे नहीं, उसे पार करें। अगर चुनौतियां बड़ी हैं तो हम छोटे छोटे कदमों से, जैसे हमें इकरम ने बताया, उसका सामना करें। और कहीं ना कहीं हमारे पास शक्ति है, हम अपनी किस्मत भी खुद लिख सकते हैं। भगवान हमारे साथ है, तो भगवान में, जैसे इकरम ने बताया कि उसकी भी आस्था है, लेकिन इकरम ने ये भी जिक्र किया कि कैसे हम उस इच्छा शक्ति से, अपनी इच्छा शक्ति से हम उस किस्मत को लिख सकते हैं, अपनी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। और एक लाइन जो इकरम ने हमारे साथ साझा की वो है, जब तक हमारे प्राण हैं, जब तक हमारी सांसें हैं, जब तक हम सपने देख पा रहे हैं, जब तक हम जीवित हैं, जब तक हम अपनी जो चुनौतियों का है सामना कर सकते हैं। ऐसा कोई भी रुकावटें हैं जो हमसे, हमारे जीवन से नहीं है, हम में बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ऐसा इकरम का मानना है। थैंक यू मैम। Thank you. थैंक यू। And now I think it's time. uh, Thank you so much, Ikram, for your inspiring words and for sharing such valuable perspective with us. And I feel that student must have learned a lot today and been very much inspired from you. I hope so too. And that's the whole Ikram, reason why I do what I do. So I hope you're all inspired. Yes. Ikram, Did I hear after train, someone? we want to Yes. see you at a lunch or dinner table. After train, we want to see you at a lunch or dinner table. I would love to. And Hello. likewise, if you ever find yourself back in the US, Ankit, you reach out to me. Even you, Ruchi. And any one of you, honestly. So I live in PA, that's Pennsylvania in the United States. If you ever find yourself there, know that you have a connection. This is a lifelong connection. Now I want to Yeah. ask respected principal ma'am, if you wish to say some words to Ikram and all the participants, if you are there, principal ma'am. Uh, Good evening to all participants. First of all, I would like to thank Ms. Ikram for this wonderful talk, and I really hope our students would have benefited from this because I think education is very important for all of us. And when we talk about girls, it gives feathers to them to fly in the sky of their dreams. And also because women play a pivotal role in their families, so I think education is must for them. I'm really grateful to Ruchi Aruraji and Ankit ji for their active participation in this session. And of course, a big thank to Dr. Deepak Chanwani sir for organizing such an informative talk. And I think this kind of talk is such an innovation for our government college Khairthal also. And thanks to all participants. Thank you. Thank you, principal ma'am, for your kind words. And finally, I would like to invite Sakshi Jain ma'am to thank Ikram and Ruchi. Sakshi Jain ma'am is convener of Women's Cell in Government College Khairta. Good evening, everyone present in the session. Okay, so I would like to summarize what has been said in the session. So, starting by the quote, when you educate a woman, you educate an entire generation. It clearly underlines the importance education holds in a woman's life and the importance it has for the entire generation and the nation as well. So, when we talk about how education empowers a woman, it can have various dimensions like economic, social, political, personal, and various other dimensions too. So, education helps women to understand their rights, responsibilities, entitlements. They can become aware of issues like gender equality, health, and also their legal rights. Education also provides them access
to opportunities like having good jobs or being entrepreneurs. It allows them to contribute to their household income and also have a say in the financial matters and financial decisions of the family. That usually, if you are not educated, you are not allowed to have a say. Education also empowers women to participate in decisions and choose their careers. They can choose the paths they want to be, the partners they want to choose. They can choose their careers, the colleges they want to study. Education also helps women to make better and well informed decisions regarding the health. They are more aware about the health, nutrition, hygiene that can be helpful to not only themselves but also to their entire family. So, concluding this, I would now like to extend my heartful vote of thanks to Ms. Ikram for delivering such an inspiring and thought provoking session. The real life examples and your journey that you shared will truly inspire and encourage the girls of a college, and they will maybe they will see education beyond textbooks. They'll help them to gain more confidence and build a better career for themselves. We are grateful for the time and effort you took to enlighten us with your experience and perspective. I would also like to thank Ruchi Arora ma'am for being such a wonderful, for doing such a wonderful job at translating whatever has been said in the session. You were really good, and this surely helped the girls and our students to understand whatever was said in the session so much better. I would also like to thank our principal ma'am for providing us with this valuable opportunity, and to everyone present here for being such an attentive audience. So once again, thank you, Ikram ma'am. We hope we get to see you another time soon. So thank you. Thank you. And honestly, it's an honor and a pleasure, and I look forward to being invited again. Thank you Sure. again. Okay, thank you, Sakshi Jain ma'am. Thank you, Ruchi Arora ji, and Ikram especially, and all the wonderful participants and audience. Thank you. May I now just close the session, if I your just want permission? to say one thing. One thing. Okay, If okay. if there is Achal or Garima from Innovative House, please just say hello to Ikram, or you can say thanks officially from Innovative House also. Thank you. Uh, Hi Okay. everyone. So this is Garima. Hi Ikram, and this Hi, has been a Garima. really inspiring session. Garima, So thank you Ikram and Sonal for sharing your inspiring journey. Like it means a lot when people share their life journey with others. So it was really inspiring, and thank you to Deepak sir and Ankit sir, and special thanks to Ruchi Di that she really translated it really well, and yeah, really inspiring session. thank you, Thank you for And Garima. most attending. You important thanks to Principal Ma'am in India. Most important thanks to Principal Ma'am for right. organizing this event. And in India, Principal Ma'am, we are thankful. And in United States, Ikram. Thank you, sir. Thank you. So thank you so much. Thank you all. Okay. Now permission granted to close the close this event or this session. All right. Nice to meet you all, and thank you again for inviting, and thank you for making this possible. Okay. I I will hope you have share a wonderful evening. I will share YouTube link for this session, and you can share with your nears and Yes. dears. Sounds good. Thank you. Thank you all. Thank you, Okay, Ikram, Ikram. Ruchi, See you in Ankit, India. Bye. and all. Thank you. Bye bye. Soon, Bye. Ankit, soon. Thank you so Thank you. much.